Very good evening, children. Today we'll be starting definite integration by substitution method. Many people make common mistakes, though the answer gets correct, but that common mistake makes the sum logically incorrect. Let us see how to deal with that. So take the help of example 0, 1 by root 2 sin inverse x upon 1 minus x square 3 by 2 dx. Okay, so we know that we need to put sin inverse x as t. So when I put sin inverse x as t, I will get 1 upon square root of 1 minus x square dx as dt. ठीक है. Now see, ये dx के लिमिट्स थे. So these were the values of x equal to 0, x equal to 1 by root 2. But I am making it now t, so I need to change the limits also. I want the limits of t now. Okay, so I'll write here x and write here t. When x is 0, what happens to t? When x is 1 by root 2, what happens to t? So I'll substitute here. When x is 0, t becomes sin inverse 0. That sin inverse 0 means 0. When x is 1 by root 2, so t becomes sin inverse 1 by root 2. Sin 1 by root 2 किसके लिए होता है? Pi by 4 के लिए. किसके लिए? Pi by 4 के लिए. So now my question becomes integration of 0 to 1 by root 2 की जगह I will write 0 to pi by 4. Sin inverse x क्या है मेरा? t. 1 minus x square raised to half कितना आएगा? dt dx upon this square root means 1 upon 1 minus x square raised to half dx equals dt. Correct? So that becomes dt. My power was 3 by 2, so 1 minus x square by default will be left. 1 plus half कितना होगा? 3 by 2. So 1 minus x square left. So what I will do? I can therefore write what is the value of x now? X will be sin t. X कितना हो जाएगा? Sin t. This went off. This is left. So I'll write this as 1 minus sin square t. Correct? X की value sin t. So it becomes 0 to pi by 4. 1 minus sin square is cos square. 1 upon cos square is sec square t. So it becomes t sec square t dt. Now I'll be dealing with integration by parts, algebraic, trigonometric. So ये हो गया, ये v हो गया. So what you will get? U integration of v minus integration of derivative of u into integration of v, the whole integration. Remember, सब जगह 0 to pi by 4 आएगा. 0 to pi by 4. Sec square t का इंटीग्रेशन क्या है? tan t. So t tan t. Again we forget to put the limits to entire part, which is wrong. Minus इसका इंटीग्रेशन 1, इसका इंटीग्रेशन tan t dt. Now I know the limits, so I can resolve here itself. So t कितना है? Pi by 4 tan pi by 4 minus 0. Okay, minus tan का इंटीग्रेशन क्या है? log of sec x. x क्या है मेरा? t. Again 0 to pi by 4. tan pi by 4 कितना हुआ? 1. So it is pi by 4 minus, now this become log of sec pi by 4 minus log of 0. log 0 कितना हुआ? Sorry, log of sec 0. Sec 0 is 1
log 1 is 0, तो ये root 2. So pi by 4 minus log root 2. This can be further simplified as pi by 4 minus half log 2. Now here there is no need to resubstitute because we have changed the limits. Many times what we do, we forget to change the limits and we resubstitute. We get the same answer, but problem starts here. This was defined, this function was defined from 0 to 1 by root 2. So I cannot guarantee that this function will also be defined for 0 to 1 by root 2. So if you don't change the limits, straight away here you will get 0. Okay? Now next sum. Second one. It is integration of sec square x dx upon 3 tan square x plus 4 tan x plus 1. It is from 0 to pi by 4. Now you know that denominator quadratic है tan के अंदर, so by default I need to put tan x as t. Therefore I will get sec square x dx as dt. The moment I substitute, I will think of limit changing. Correct? So I will make x and t. What is my x? 0. And here x is pi by 4. Substitute यहाँ करेंगे. Tan 0 is 0. Tan pi by 4 is 1. So my new question becomes 0 to 1. Sec square x dx becomes dt. और ये हो जाएगा 3t square plus 4t plus 1. Now remember quadratic है. So I'll take 3 common. 0 to 1 dt upon t square plus 4 by 3t plus 1 by 3 साइड में लिखेंगे. So half into 4 by 3. Now remember all these steps. So आएगा plus 4 by 9 minus 4 by 9. So ये हो गया 1 by 3 0 to 1 dt. ये हो गया t plus 2 by 3 the whole square. I'll multiply this by 3. So ये आएगा minus 1 by 3 the whole square. Understood? Now set is 1 upon x square minus a square. क्या है उसका फॉर्मूला? 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a square bracket 0 to 1. 3 cut. So 1 upon 2. ये हो जाएगा log अल्फा सिंप्लीफाई 3t plus 1 3t plus 3 है ना. Now 0 to 1. Now we know how to substitute. So आ जाएगा log. I'll substitute 1 first. So 4 upon 6 minus log 1 upon 3. If I put 0, correct? So हो जाएगा half log 4 by 6 into 3 by 1. So 3 2s are 2 2s are. So answer is half log 2. Understood? Yes. Now next sum. It is 0 to 4 pi sin 2x upon sin raised to 4x plus cos raised to 4x. ठीक है. Now here what you will do? इसका power 4 है. I want to make it quadratic. So let us see how we can do that. I'll write this as 4 pi sin 2x dx. This can be written as sin square x plus cos square x the whole square minus 2ab. You remember
a square plus b square can be written as a plus b the whole square minus 2ab. Let's open this. Sin to the power 4 plus cos to the power 4 plus 2 sin square cos square cut. So it is correct. ये कितना हो जाएगा 1. So 0 to 4 pi sin 2x dx upon 1 minus, now this can be written as 2 sin square x. I write purposely cos square x as 1 minus sin square x. ठीक है. Now ये x square होना चाहिए था, but ये sin square है. So I will say let sin square x equals t. इसको t पुट किया, क्या आएगा 2 sin x cos x dx as dt. What is 2 sin x cos x? Sin 2x dx as dt. देखो ये dt हो गया, ये t हो गया, ये भी t हो गया. Now limits, yes, x ये t, correct? Now x is 0, x is 4 pi. x को 0 पुट किया, t कितना आएगा? sin 0, that is 0. Then if I put x as 4 pi, I think the limits are wrong. x को 4 pi put किया, still the answer is 0. Let me check the question. Okay, so both are coming 0. I think something is misprinted. Just a minute. 4.2. Question number 2, third one. Something is wrong over here. It cannot be pi. It has to be okay. I'll correct this question and we'll do it next time. Okay. Next one. It is 0 to 2 pi root of cos x into sin cube x dx. Whatever is under root sign उसको t पुट करना है, करेक्ट? So whatever is under root sign उसको क्या पुट करेंगे? t पुट करेंगे. क्या पुट करेंगे? t. So I'll put cos x as t. cos x को t पुट किया तो माइनस sin x dx क्या हो जाएगा? dt. तो एक sin x चला जाएगा, sin square x रह जाएगा. So let us first simplify that part. So 0 to 2 pi root cos x. I'll write sin square x as 1 minus cos square x into sin x dx. तो यहाँ पर लिमिट्स चेंज होंगे. We should never forget to change the limits. x t 0 2 pi x 0 पुट किया कितना आएगा 1 है ना. x 2 pi पुट किया फिर भी कितना आएगा 1. So both the limits are coming same. So हो जाएगा 1 to 1. x कितना है t. So root t sin x dx. sin x dx क्या हो गया माइनस dt और ये हो गया 1 minus t square. No need to integrate because both the limits are same. So directly I can say that my answer is 0. Okay? Yes? Now next, very important sum, fifth one, and a very lengthy sum. 0 to pi by 2 dx upon 5 plus 4 cos x. क्या है 0 to pi by 2 dx upon 5 plus 4 cos x. तो a plus b cos x है. If you remember, it come like this. dx equal to 2 dt upon 1 plus t square. और मेरा cos x आता है 1 minus t square upon 1 plus t square. इसमें t क्या होता है? We know that t होता है मेरा यहाँ पर
tan x by 2 क्या होता है t tan x by 2 the derivative part completely you will write x कितना है 0 x कितना है पाई बाय 2 x को 0 पुट किया tan 0 हो गया 0 x को पाई बाय 2 पुट किया ये पाई बाय 4 हो जाएगा that is 1 so resubstitute everything okay so see इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1 मेरा dx आएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल अपॉन ये हो जाएगा 5 प्लस 4 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0 to 1 2 dt अपॉन 5 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर ठीक है 5 माइनस 4 1 5 प्लस 4 9 तो 2 बाहर निकालेंगे 0 to 1 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 9 9 मतलब 3 स्क्वायर तो आएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a वो लिमिट 0 to 1 तो हो जाएगा 2 by 3 इसे बिकम tan इनवर्स 1 by 3 माइनस tan इनवर्स 0 क्या होता है 0 दिस इज योर आंसर ओके यस नेक्स्ट सम चिल्ड्रन दैट इज 0 to pi by 4 cos very simple sum cos x upon 4 minus sin square x ठीक है यू नो दैट यहाँ x स्क्वायर होना चाहिए था बट नहीं है सो विल मेक इट एज x स्क्वायर बाय पुटिंग sin x as t तो cos x dx क्या हो जाएगा dt अगेन आई सब्स्टिट्यूट द लिमिट चेंज द लिमिट सॉरी x t ये 0 ये पाई बाय 4 sin x है sin 0 0 sin पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 तो ये क्या हो जाएगा 0 से लेकर 1 बाय रूट 2 cos x dx क्या हो गया dt इज बिकम 2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर रिमेंबर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस x a माइनस x इसको लिमिट आएगा 0 से लेकर 1 बाय रूट 2 ठीक है सो इट बिकम्स 1 बाय 4 पहले रूट 2 पुट करेंगे सो लॉग 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस इफ आई पुट 0 2 प्लस 0 2 2 माइनस 0 2 2 अपॉन 2 1 तो आएगा लॉग 1 ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा 1 बाय 4 2 रूट 2 प्लस 1 2 रूट 2 माइनस 1 सो लॉग 2 रूट 2 प्लस 1 2 रूट 2 माइनस 1 दिस इज 0 लॉग 1 0 होता है ठीक है नाउ द लास्ट सम सेवेंथ वन 0 to pi by 2 dx sorry cos x dx 1 plus sin x 2 plus sin x ठीक है now see if you see the brackets and denominator सारे linear factors है खाली sin x is a problem for us correct linear factors में trigonometry allowed नहीं है so I will put here sin x as t क्या करूंगा मैं sin x को t पुट करूंगा therefore my cos x dx will become dt limits x t 0 pi by 2 sin x है तो ये 0 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा ठीक है now सिर्फ प्रैक्टिस करो ये एक्सरसाइज पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर का आपको ग्लिम्स मिल जाएगा so it becomes 0 to 1 cos x dx dt
ये हो जाएगा t प्लस 1 t प्लस 2. दैट इज योर चॉइस. आइदर मल्टीप्लाई और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करो या पार्शियल फ्रैक्शन पे जाओ. आई विल सॉल्व दिस बाय पार्शियल फ्रैक्शन. सो 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2. क्या है? सेम डिग्री डिफरेंट रूट्स. सो 1a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो a टाइम्स t प्लस 2 b टाइम्स t प्लस 1. नाउ लेट t इक्वल टू माइनस 2. ये 0 हो जाएगा तो 1 इक्वल टू b माइनस 1 आएगा. देयरफॉर b कितना हो गया? माइनस 1. नाउ आई विल से लेट t इक्वल्स माइनस 1 ताकि ये 0 हो जाए. तो 1 इज इक्वल टू a आएगा. दैट इज a 1 आ गया. आई गॉट द वैल्यूज ऑफ a एंड b. यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा a अपॉन t प्लस 1 b अपॉन t प्लस 2. लिमिट्स क्या है? 0 टू 1. ठीक है. 1 अपॉन का इंटीग्रेशन log t प्लस 1. इसका भी log t प्लस 2. 0 टू 1. पहले 1 पुट करते हैं. 1 पुट किया. 1 प्लस 1 2. 1 प्लस 2 3 माइनस. अब 0 पुट करेंगे तो log 1 माइनस log 2. ठीक है. सो इट बिकम्स log 2 माइनस log 3. log 1 क्या होता है? 0 माइनस माइनस प्लस log 2. log को सिंप्लीफाई करो. क्या आएगा? log 4 by 3. ओके, अंडरस्टूड? यस, थैंक यू.